Welcome to Goa 365's News Now. I'm Manish Parab and these are the headlines. Goa's high detection, low conviction rate continues to be a concern, even as police arrest key accused in Ganeshpuri Mapsa murder case. Fear of the law plummets. Retaining wall collapse in Dhargal exposes shoddy construction in Goa's development projects. Local MLA shifts blame. Kalakurichi huge tragedy death toll reaches 53 as Tamil Nadu government scrambles to address crisis. And now for the news in detail. The government has been touting its development work. However, the quality of work has come under question many a times. Now watch this dangerous incident which smacks of inefficiency of the contractor and quality of work. We see this happening at Smart City work in Panjim, many instances of highway work as well as even parts of the Atal Settu. Bad quality work goes unpunished. Listen to our reporter on this latest incident. Don't you think the contractors have to be prosecuted? हांव ज्या जाग्यार उबो आसा थंय तुमकां दिसता फाटल्यान एक वॉल कॉलॅप्स जाल्लेली आसा. ही जी वॉल कॉलॅप्स जाल्या ती नयबाग ते मालपे हेच्या बरोबर मदल्यान जो रोड हो बायपास काडलेलो आसा थंय आतां उबे आसा म्हणजे इतले डेंजर परिस्थितीन उबे आसा सांगपाचें म्हटल्यार सांगूं येना केन्ना कितें जावं येता अशी कंडिशन दोनूय सायडीन आसा आनी सगळ्यो गाडयो डायवर्ट केल्लेले आहा एका सायडीन जी आयज सकाळी जाल्लेली आसा. The local MLA Pravin Alekar, locals and the media got into an argument over the quality of work. कॉलेज झाला ती माझी हे नव्हती हायवे ऑथॉरिटीची आम्ही तेच म्हणता हायवे ऑथॉरिटी ताब्यात ना काय म्हणता आम्ही कित्याक हायवे ऑथॉरिटी तू सांगताय पळय ती आमचो डायनेमिक सीएम आहा पळय ती सीएमाकडे आहा ते ऑलरेडी सीएमाकडे उलयल्ले आसा आणि सीएमान सांगलेले आहा सीएमान आता जो नॅशनल हायवे जो करता तो सीएमाच्या अंडर करतात काय कितें जो पळय हो हायवेचे PWDचे जे पळय जी कामां आसा पळय PWDची कामां ही सीएमाकडे PWD आसा ते सीएमाक ऑलरेडी सांगलेले आसा. MVR कंपनी कोणाच्या अंडर काम करता तर ती MVR कंपनी कोणाच्या नावातून पळय तुका आतां कितें सांगता तूं आतां म्हाका क्वेश्चन करता पळय तुका ही कामां करून दिले काय जालें पेडणेकार हय पण आमी गेल्या वर्सा सांगताले ती प्रोटेक्शन वॉल कॉलॅप्स जातली आयज ती कॉलॅप्स हांवेंय सांगलेली ती आयज ताचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा न्हू ती घेयात म्हणटा एक्शन घेतात हांव न्हू एक्शन कित्याक घेना म्हणून सांगता तूं कोणाचेर एक्शन घेतले आनी केन्ना घेतले जे पळय कितें करूंक जाय फाल्यां हांव सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेतलो जाल्यार तुमकां दिसता जाल्यार तुमी सीएमा कडेन येवचें. सकाळचो इन्सिडंट जालो पळय ती गाडी मातशी डॅमेज जाल्या समजा देवाचे उपकार सांगता ती वॉल म्हणटा पळय ताका म्हणटा प्रोटेक्शन वॉल प्रोटेक्टींग कोणाक गाडयांक ती रॉक तेचेर पडले आनी ते वॉलाक लागून तो वाचलो ना जाल्यार तो मरतलो आसलो ते वॉलाक लागून ते वाचलो. आतां आमच्यान ते दुसऱ्याचे जमीन वचपाक कांय करपाक जायना म्हणजे आता जर एक्विजिशन जावपाक जाय आसलें पयलें हांव फाटलें कांय उलोवंक शकना. म्हाका याद जाता की 1 तारखेर 1 जुनाक ह्या वर्सा ह्या म्हयन्यान आमचो एक पत्रकार भावान एक बायट घेतलेली आमी हांगा रावल्या सगळो न्याय दाखयल्लो सगळ्याक आनी तेन्ना हांवें मागणी केल्लेली काँग्रेस पक्षा तर्फे की ह्या रस्त्याचे पावस येयलो जाल्यार हे वयले कोसळटले आनी कितें तरी जातलें म्हणून. सुदैवान कोणाची जिवीत आनी जांग ना ह्यो जो इन्सिडंट सकाळी घडला तो. पूण म्हाजी तातडीची मागणी आहा सरकारा कडेन की हो रस्तो बंद करचो. तुमी हांगा पळयल्यात हो पळय हे कोसळलेले आसा फाटलो कोसळ्ळा हेका आनी कांय ना सपोर्टींग कांय ना ही माती हा भुसभुशीन आसा. जे इंजिनियरान हे काम केला त्याच्या वयल्यान कळटा की तेजी डिग्री खरी आहा का खोटी आहा ती. हे हांगा पेडण्यात अशें न्ही पूर्ण जितलें काम आसा हाजी पाड घाल्ली आसा सरकारान आनी हे जें काम आसा एका पावसान जे येलो अलर्ट आनी रेड अलर्ट दिता ते केन्ना अलर्ट ते म्हाका खबर ना पुणून बारीक सादारणसो पावस पडला अजून तसो व्हडलो पावस पडूंक ना ही जस्ट सुरवात आसा. आतां ह्या सायडीन रिटेनिंग वॉल आसा ही उरल्या ती रिटेनिंग वॉल आसा जर ही कोसळूंक शकताले ही कित्या खातीर कोसळूंक शकना. गांवकारान म्हणलें की फाटीं सुद्दां हो तो रोड व्हांवून गेल्लो फाटल्या पावसान जेन्ना काम चालू आशिल्लें हांगा ते पेडण्यात न्हंयभागाक तेन्ना अख्खे कोसळून गेल्लो. ताज्या उपरांत सुद्दां ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कांयच कारवाई जावना. पयलीं 365 चॅनल जे आमचे गोंयचे जे आसा आनी ह्या
ह्या रिटेनिंग हॉला बद्दल मालप्याची जी आसा ही मोडटली आमी पयलींच सांगलेली. रिटेनिंग हॉल बांदता आसतना जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा आयज हो BJPचो लागचो आसा आनी जी काम जी करपाची पद्दत जी आसा न्ही MVR कंपनीची कोणच्यांची जेन्ना आमी फुटींग जेन्ना घालता रिटेनिंग हॉलाक फुटिंगाची सायज आनी हांगाली तुमी हांवें दाखोवं शकता मुद्दम हांगा दाखय ही एक सायड आसा ही हेजी सायड तुमी पळोवंक शकता. हेजी सायड तुमी पळया ही म्हाका दिसता ही सकलसून अर्द मिटर सुद्दां ना वयर वचून ती एकदम ती 30 सेंटीमीटर वयर जाल्लेली आसा. पूण फुटींग जेन्ना घालता फुटिंगाची कोणच्यांची सायज जी आसता न्हू त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा PWD मिनिस्टरचे चीफ इंजिनियर जे आसा नॅशनल हायवेचे हे खंयसून तरी तेंच्याकडे कॉम्प्रोमायज करता. सगळ्यांची अशी नाही की आम्ही रिपोर्टर आसा ते पळयता आनी आमकां दिसता की हो रोड दोनूय रोड हे सारके ह्या सायडीन वचपाक डेंजर आसा. खंयच्याय क्षणाक ही दुसरी जी हे आसा वॉल आसा न्हय ही वॉल केन्नाय कोलॅप्स जावपाची शक्यता आसा. कारण वयर जर पळयत जाल्यार ती वयल्यान सुटलेली आसा आनी केन्नाय ही सकयल पडूंक शकता. कारण सरकारान जर इन्सिडंट व्हडलो जावपाक नाका जाल्यार आत्तां हो इमिडिएट हो रस्तो बंद करपाचो आनी जुनो जो रस्तो आसा तो वापरूं येता. Sandeep Kamalkar and Sangeeta Oli for Goa 365. Goa has been rocked by multiple heinous crimes on top of the almost daily fatal accidents. As Goa 365 has highlighted, our detection rates are good, but conviction rates are below the national average, despite we being a small state and a highly developed one. According to people, especially those from outside the state, the police can be managed as they are mostly busy collecting money including challans, a point brought up by a ruling North Goa MLA. We have been told face to face that even if these outsiders assault and harass the media, they would get bail in a couple of hours. Goa 365 will take up this issue of this dadagiri by outsiders and their lack of fear of the law, both police and judiciary in Goa. Ironically, Goa 365 has spoken to many such individuals. Shockingly, many people who have come down and even settled in the state have no respect for the police as well as the fear of the judiciary. But now listen to the cops on this latest murder. देखिए इसके अंदर जब भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं पुलिस प्रिवेंटिव एक्शंस भी ले रही है. जैसे आपको बताया गया है एक हमारी स्कीम चल रही है ऑपरेशन राखन जो हर रात को प्रत्येक पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर गौड़ डिस्ट्रिक्ट के नाइट को पेट्रोलिंग कराया जाता है. और उसके अलावा जब भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट हमारी नॉलेज में आता है कि ऐसा क्राइम हुआ है तो उसके अंदर स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन अंडर लॉ लिया जाता है और जल्द से जल्द जो भी लोग इन्वॉल्व हैं ऐसे क्राइम्स में उनको अरेस्ट किया जाए. The SP North gave details of this latest brutal murder and the arrest of the prime accused, a person known as RK. जैसे अभी सूचना आप लोगों को मिली रही है इसके अंदर जो मेन एक्यूज था रामकृष्णन ऑल्सो नोन एज RK ऑल्सो नोन एज बलाल उत्तम इसको हम कुछ दिन से तलाश कर रहे थे. जब से इंसिडेंट हुआ था तब से ये फरार था और इसकी अरेस्ट करने के लिए मल्टीपल जगहों पे रेड्स भी कंडक्ट की गई थी हमारी गोवा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी. और कॉन्स्टेंटली एक तरीके से इसका पीछा किया जा रहा था पुलिस की तरफ से और अपनी बार बार ये जो हाइडआउट्स था ये इसको चेंज कर रहा था. तो इसके अंदर एक हमें एक इम्पॉर्टेंट कल एक सफलता मिली जब इसको कल अरेस्ट किया गया और इसको अरेस्ट करने की वजह से इस केस के अंदर कुल टोटल ऑफ 7 persons have been arrested and the Mapsa police station has successfully worked out this case by arresting all the main people. I will read out the names of the people who have been arrested. The name of the accused are Manthan Chari, Shridhar Kiledar, अभिषेक पुजारी, चंप्या, नागराज, बोरेश पुजारी और कल RK को हमने इसके अंदर अरेस्ट किया. तो ये 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद अभी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं हमारे और भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर और भी अरेस्ट हो सकते हैं अगर कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व और हमें दिखा इस केस के अंदर तो उनको भी अरेस्ट किया. Nitiksha Gavkar and Bhakti Paibalgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina held extensive talks in New Delhi on Saturday, reinforcing the strong partnership between India and Bangladesh. The leaders focused on expanding cooperation across various sectors, including trade, connectivity, and emerging technologies. The summit resulted in several key agreements, notably in digital collaboration, environmental initiatives, and maritime cooperation. Both leaders emphasized the importance of these new areas of partnership for the future prosperity of their nations, particularly highlighting the potential benefits for younger generations. आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है। ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमने अपने फोकस में रखा है कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन। पिछले 10 वर्षों में हमने 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया है। अब हम और अधिक डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी पर बल देंगे। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी। हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों पक्ष सीपा पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हैं। बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए हमारी विजन समान है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। Prime Minister Hasina acknowledged India's crucial role in Bangladesh's history and stressed the value of their enduring friendship. The visit, marking the first bilateral state visit by a foreign leader since India's recent elections, underscores the significance of India-Bangladesh relations in the region. Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. Now for the weather. The Indian Meteorological Department has issued a red alert for the state on Sunday, warning of severe weather conditions that include heavy to very heavy rainfall, strong winds and squally weather. Here's the complete weather forecast. According to the IMD, the state is expected to receive moderate rain, with isolated areas likely to experience extremely heavy rainfall. The forecast predicts 1 or 2 spells of rain characterized by short and intense bursts accompanied by strong surface winds. These weather conditions are expected to result in a significant increase in rainfall activity across the state. Temperatures are not expected to see much variation, with the maximum temperature likely to be around 28 degrees Celsius and the minimum temperature around 25 degrees Celsius.
In addition to the rainfall, squally weather conditions are predicted, with wind speeds ranging from 35 km per hour to 45 km per hour, gusting up to 55 km per hour. These winds are expected to prevail along and off the North Maharashtra coast on the 21st, 22nd, 24th and 25th of June. Due to the hazardous weather conditions, fishermen are strongly advised not to venture along and off the South Maharashtra Goa coast during this period. IMD issues red alert issued for Sunday. Goa braces for severe weather conditions on Sunday. Extremely heavy rainfall, very likely in isolated regions. Temperatures to remain stable. Maximum and minimum temperature on Sunday, 28 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Fishermen advised not to venture along and off the Goan coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv, follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.